हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। तो इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लॉ ऑफ क्राइम दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ यूपीएससी लॉ ऑप्शनल्स। सो इस बेसिकली सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया था, जिसमें वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ब्रांच ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के ब्रांच में लास्ट में आते आते हमने ये देखा था कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या स्टेजेस होते हैं क्राइम के। Now let us understand about various definitions of crime that is given by various scholars, और उन definitions की help से हम crime एज एन एक्ट को समझेंगे क्या होता है, और उसके पीछे चल रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया एंड एक्टस रियस को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन। सो देखिए इसमें क्या है, the first slide, it is change in nature of crime. So in the present society, due to the advancements that are actually going on, क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इन सोसाइटी, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चल रहे हैं, या फिर क्या होता है कि पहले एग्जिस्टिंग सोसाइटी की हम अगर आज से 100-200 साल पहले बात करें तो उस समय द मोरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी वाज वेरी डिफरेंट। उस समय द मोरल कल्चर, द मोरल सेंटिमेंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल वाज वेरी मच डिफरेंट। अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन एंड ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लोगों की मोरालिटी भी इंपैक्ट कर रही है, लोगों के मोरल सेंटिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। पहले जो इंडिया के अंदर लोगों को सती राइट लगती थी, वही अब गलत लगती है। पहले जो अडल्ट्री को ऐसा बहुत हीनियस क्राइम देखा जाता था, अब उसकी कल्पेबिलिटी को डिक्रीज किया गया है। पहले जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, अभी वही सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। पहले विमेन को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, अगर हम बात करें तो अभी विमेन को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सो ड्यू टू दिस, क्योंकि सोसाइटी में ये सब चेंजेस आ रहे हैं, तो इन्हीं चेंजेस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो है क्राइम की डेफिनेशन भी बहुत बदलती दिखाई दे रही है। मॉडर्न क्राइम इंक्लूड सो मेनी डिफरेंट ऑफेंसेस लाइक साइबर ऑफेंसेस, इकोनॉमिक फ्रॉड्स, एनवायरमेंटल क्राइम्स एंड इवन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अदरवाइज पहले इन्हीं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को ऐसे एज सच नहीं इंक्लूड करके एज अ ट्रीजन ट्रीट किया जाता था, और बहुत अलग तरीके से उनके साथ डील किया जाता था। The idea of crime has actually expanded now. जो पहले, so the idea of crime is expanded from private injury to protection of collective social order and security. Now ये देखा जाता है, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो फॉर एग्जांपल A has murdered B, A has committed an offense of murder against B, तो A ने अगर B का मर्डर किया है तो उसको ऐसे देखा जाता था कि बस वो B के अगेंस्ट एक एक्ट हुआ है। लेकिन अब क्या देखा जाता है, अगर A ने B का मर्डर किया, now that act of murder is not just seen as an offense against B, but is also referred to as an against offense against the collective security of the society, कि A ने अगर B को मारा है तो वो किसी को भी मार सकता है। So A is not just a threat to B but also threat to the collective social order. Okay, so this is the changing nature of crime. So as a legally defined conduct अगर हम देखें तो crime जो है वो क्या है, it is basically the act that is prohibited by law. क्राइम क्या है, क्राइम वो एक्ट है जिसको कि लॉ ने प्रोहिबिट किया है, नॉट मियरली द मोरल फीलिंग्स। ओके, सो मोरालिटी बहुत सारी चीजों की बात करती है, लेकिन लॉ को मोरालिटी से लेना देना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोरालिटी तो ये बोलती है कि डाउरी लेना जो है, एज प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हमारी रूरल, मेजरली रूरल सोसाइटी या इवन अर्बन सोसाइटीज की मोरालिटी ये बोलती है कि डाउरी में कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉ, क्योंकि लॉ ने इसको जो है पनिशेबल ठहरा दिया है, तो दैट इज व्हाई इट इज रेफर टू एज क्राइम। ठीक है, मॉडर्न स्टेट्स जो है इंटरवीन्स टू प्रिजर्व द ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ एंड पब्लिक स्टेबिलिटी। सो मॉडर्न स्टेट्स ने कोडिफाई किया है क्राइम को, मॉडर्न स्टेट ने क्लियर कट डेफिनेशंस दी है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया अर्लियर देयर वाज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, एंड नाउ आफ्टर 2023 देयर इज भारतीय न्याय संहिता, दैट इज द कोडिफिकेशन ऑफ द क्राइम, okay, by the state. So legal definition prevail over personal or moral perceptions. Okay, so legal definition जो है वो हमारे personal या moral perception से कहीं ज्यादा अलग है। ठीक है, now talking about statutory definition. So the statutory definition of offense is mentioned in section in the BNS section 2 clause 24. What is offense? So according to BNS, offense is any act
or omission. Act is basically positive, like you are acting. Omission is not to fulfill the legally bound duty, किसी काम को जो कि you were supposed to do to prevent the crime. So basically omission means which you were supposed to do but you didn't did that. Okay, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिसर जो कि लीगली बाउंड थे, सामने हो रहे किसी डकैती या फिर किसी जो है ऑफेंस को रोकने के लिए, बट ही ओमिटेड डूइंग दैट, उन्होंने उस काम को, उस रोकने को नहीं किया, दैट विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज क्राइम. सो एन ऑफेंस मींस एनी एक्ट और एनी काइंड ऑफ ओमिशन दैट इज मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, ओके, और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स. तो किसी लोकल लॉ या इस संहिता ने जिन भी एक्ट्स या ओमिशंस को पनिश किया है, so according to BNS those acts are referred to as, or even those omissions are referred to as ऑफेंसेस. ओके, सो एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस या तो उस एक्ट पे है या फिर उन ओमिशंस पे है जिनको पनिशेबल ठहराया है. ओके, सो क्राइम इज प्योरली द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ओके, सो इट शोज, crime as a concept shows the authority of the state, that state is only legally entitled to punish, to basically impose the culpability on someone, and it is basically just the creation of the law. So crime as a concept, who is the creator of the crime as a concept? Is the God creator the creator of the concept of crime? No, so God is not the creator. God might have given some sentimental values, some morality, some teachings, but ultimately the creator of crime is law. Okay, so legal definition as given by Blackstone. So according to Blackstone, crime is an act committed or omitted in violation of a public law. Okay, so according to Blackstone, there exists a public law. Public law is basically the law that governs the relations of the people with the state. So what kind of relations do we share with the state? So according to Blackstone, anything that is committed against basically the public law is crime. Okay, so he has distinguished public wrong from the private civil injuries. Private civil injuries are those injuries which are basically committed against इंडिविजुअल्स, जिसमें जो इंजरी होती है वो बस पार्टीज इन्वॉल्व को होती है. बट इन केस ऑफ पब्लिक रॉन्ग्स, दैट इज बेसिकली द क्राइम्स. सो इन दैट केस द इंजरी इज देयर कलेक्टिव, वो स्टेट को इंजरी होती है, पूरे देश की कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंजरी होती है. Punishment imposed in interest of society at large. So why is the crime punished? So crime is basically punished because the crime, that offense, that act or the omission has disturbed the law and order or the interest of the state at large. Okay, coming on to criticism of the definition of Blackstone. So this definition is considered to be narrow and basically formalistic. It is just formal in nature and does not explain the social or the moral basis of criminalization. Okay, so it is also true that certain acts are criminalized because the society has the morality to criminalize it. The society, according to its collective conscience and morality, consider those acts as crime. That is why also some acts are punished. All right, so states what law declares but not why law declares. Okay, so ये बताता है कि law क्या कहता है, but it does not says, the definition of Blackstone does not tells why the law says what it says. Okay, so that's the main thing. Now coming on to the legal definition of crime given by Stephen. So Stephen says that crime is an act or omission that is punishable by law. Very simple. Okay, so it strengthens the positivist focus on punishability. It says basically कि positive, it is basically the positivist nature of the crime. Okay, in the theoretical aspect we will be talking about a positive school of law, we will be talking about the socialist school of law. Okay, so at that time we will be dealing with this concept. Now centers criminality on statutory authority. Okay, so it says that criminality is there for certain acts because the statute says that, because the law punishes that, the law says the same thing. Okay, so that is why. Moving on to the next slide. Now moving on to this sociological definition by Garofalo. So what does Garofalo says? So Garofalo says that crime is an act offending the basic moral sentiments of pity and probity. So according to him, what is crime? Crime is basically those acts which
offends or basically offending basic moral sentiments of pity and probity. He basically explains two things. First of all, let us understand what pity and probity means. So pity basically refers to repugnance against inflicting suffering. It is basically sometime what happens, for example, you as a human being, what you did, you basically killed one cockroach. Okay, so when you voluntarily inflicted suffering on that being, on that cockroach, it there comes one sentiment inside our mind that we did this wrong. Okay, so that sentiment of repugnance, वो गिल्ट, वो दुख, जब कभी कोई इंसान वॉलेंटरीली किसी सामने वाले इंसान या किसी भी चीज पर सफरिंग कॉज करता है, तो उसके मन में खुद में जो एक गिल्ट आता है, जो एक दुख होता है, दैट रिपंजेंस फीलिंग इज कॉल्ड एज पिटी. एंड व्हाट इज प्रोबिटी? प्रोबिटी होता है मतलब, प्रोबिटी मतलब गेरोफालो की प्रोबिटी जो कॉन्सेप्ट था उसका मतलब कि व्हेन वी बेसिकली हर्ट द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन ना, देन ऑल्सो देयर इज अ सेंस ऑफ रिपंजेंस इन अस. ठीक है, जब हम किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी को हर्ट करते हैं, ठीक है, सो प्रोबिटी कम्स from the respect for the property and rights of others. Okay, now we understood about the two concepts. One was the pity and another one was the probity. So what does Garofalo says? So Garofalo says crime is an act of offending the moral sentiments of pity and probity. इनके हिसाब से crime क्या है? क्राइम का मतलब है पिटी और प्रॉबिटी को ऑफेंड करना. ठीक है, पिटी और प्रॉबिटी के अगेंस्ट जाना. कोई अगर बेसिक, क्योंकि दिस ऑल पिटी एंड प्रॉबिटी डिपेंड्स ऑन द मोरालिटी, सो इट सेज दैट व्हेन वी हर्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ पिटी एंड प्रॉबिटी, इट इज क्राइम. ओके, सो क्राइम इज सीन एज नेचुरल फिनोमेना linked to the social morality. Coming on to next point, now there is a criticism of Garofalo also. He says, he basically just talks about the moral sentiment. So moral sentiments changes. So morality of India is not as similar to the morality of United States of America. Morality of USA is very different from other regions. Okay, so morality often changes. Okay, so morality is not uniform across the country. So that is a very important point. Now many modern regulatory and economic offenses are not directly the violation of pity and probity. So for example, Harshad Mehta scam. So we can say that Harshad Mehta scam was directly not the violation of pity and probity. Okay, that was not the violation of the morality of the society. So how that will be categorized under the definition of Garofalo? That's a very important thing. Now it also fails to account for the statutory and the technical crimes, the cyber crimes. So it does not takes into consideration the cyber crimes. Okay, coming on to next, crime without actual violation of individual right. Now sometime what happens, some acts are categorized as crime not because they have certainly violated some individual right. For example, A has killed, committed an offense against B of murder. A has committed the murder of B. In that case, the right to life of B has been violated in this case, but there are certain crimes in which the violation of individual right is not there. How? So actual harm to specific person is not always necessary. Now for example, you are in possession of some house breaking instruments, you are in possession of some weapons, okay, even above the statutory limits that is there. For example, for a knife there is a limit above which if you are having any kind of weapon, then that will be punishable. Now just possessing those instruments even without having any kind of intention, even without actually violating the rights of any other individual, that will be punishable. So there are certain acts that are punishable even without causing the actual harm to the individual's rights. Okay, now civil transaction injuring society. So there are certain types of civil transaction. For example, I caused a monetary loss of rupees 100 to B. Now that was that loss of monetary amount is just between I, so that is just between me and the another person who has been basically injured. Now in this case, the involvement was of the harm of monetary, so basically the financial transaction. Okay, coming on to this point, now when this financial transaction will rise from 100 rupees to 100,000 crore rupees,
Now that is not just limited to the civil injuries. Now that is not a case of violation of civil right, because in that case a very large amount is involved. In that case, large scale cheating, corporate fraud or financial manipulation affects the public trust. It basically, now if a large scale transaction, large scale fraud just happens in SBI, now this will not be the matter of just SBI, because that has basically manipulated the public trust in SBI. Okay, so then that large scale transaction will be categorized as a crime only. Okay, so even the environmental violations, so environmental violation is not at all limited to just causing the a civil injury. It is a large scale crime only. Okay, now state criminalizes serious civil misconduct impacting the economic stability of the country. Okay, now moving to the essential elements of crime. So there are majorly four essential elements of crime. Number one, for a crime to happen, there must be the involvement of a human being, and the human being must be capable of responsibility. Okay, the human being must be capable of handling the responsibility for which he must have violated that responsibility. Okay, the another element of crime is mens rea. Mens rea is the guilty mind. Okay, that's the guilty mind. Now coming on to next, that is actus reus, and actus reus is the basically the guilty act. Okay, next essential element of crime, now injury to individual or society completing the criminal liability. Now if human being of a capable age is there, it has the mens rea, even the actus reus, and he injures, he causes the injury to individual or society, that completes the criminal liability. Coming on to next, so let us understand first human being. So who the human being should be? So only human being capable of forming intention and knowledge. For example, the law says that a child below the age of 7 years at no case, in no circumstances, can ever have the capacity to form intention. Or even the person under delusion, acting under delusion. Okay, even the person intoxicated. Okay, involuntary intoxication cases. So those are the cases where the law considers that those human beings are not able to form the mens rea, not capable of committing the crime. Okay, so jurist person like the companies are also, so for by the legal entity concept, a company instituted under the Companies Act, so that company is separate from the owner, so that company is also basically considered as a jurist person. Okay, even natural forces and animals do not incur liability independently. Okay, coming on to mens rea, that's a subjective element. It refers to the guilty mental state. Okay, it refers to the mind. What is intention? For example, a intention comes in my mind that that I will kill that business person. Now that is in my mind. I haven't committed any act in furtherance of that guilty mind. Now that guilty mind is called as mens rea. Okay, so it includes the, so there are different levels of guilty mind. So it includes intention, knowledge, recklessness, and even negligence. Okay, so the highest culpability will be there if you had the intention to commit the crime. Now coming on to this point, it includes intention highest. If intention will be there, then the crime will be proved. Okay, now but even if intention was not there, only knowledge was there that by doing certain act this harm can occur. Now if you had this knowledge, then also the criminal liability can be imposed on you. Okay, now coming on to next, that is recklessness. Even you didn't had the knowledge, but you didn't taken sufficient care about the consequences that can happen, you did the act in recklessness, then also there can be criminal liability. Now even if you didn't did this in recklessness, but you didn't commit, you basically were committing negligence, you did the act under negligence, now negligence can also be held liable. Okay, coming on to this, embodies the moral principle that punishment follows blameworthiness. This is based on the concept that there must be blameworthiness before basically holding a person criminally liable. If there is no blameworthiness, then the person without intention, knowledge, recklessness, or negligence cannot be held liable for a criminal act. Okay,
Coming on to next, that is actus reus. So now the physical manifestation of the guilty mind is called as actus reus. Okay, so external voluntary conduct prohibited by law. Now what was there in my mind, now I did something, I picked up this weapon, I made the plan, I basically went outside, that is actus reus. Okay, now the physical manifestation, it may consist of positive act or illegal omission. Positive act, acted in some way. Illegal omission, it means कि जो काम बेसिकली मुझे करना चाहिए था, लीगली आई वॉज बाउंड टू बेसिकली डू दिस, तो मैंने वो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज इलीगल ओमिशन। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। एंड गिल्टी माइंड मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद गिल्टी एक्ट। तो गिल्टी माइंड के साथ जब गिल्टी एक्ट मिलता है, देन द क्रिमिनल लायबिलिटी इज formed. Okay, coming on to this next, so what is the maxim that relates it? So the maxim is actus non facit reum nisi mens sit rea. Okay, what does this means? This means that neither the act alone nor the mind alone is sufficient to prove the criminal liability. The criminal act or the offense must be preceded by the guilt. Okay, for example, their accident happened, एक्सीडेंट में एक्ट तो हुआ, act will be punishable, but if in case of accident there was no intention to cause that harm, then it will not be punished. But leaving intention aside, मानो intention नहीं था, सामने एक्सीडेंट से एक आदमी मर गया, but there was knowledge ना कि ऐसा करोगे तो ये होगा, तो नॉलेज से भी हो सकता है क्रिमिनल लायबिलिटी, बट थोड़ी कम होगी। बट फिर देन इट विल बी सीन वेदर यू बेसिकली यू वर डूइंग रैश ड्राइविंग और नॉट, रेकलेसनेस थी कि नहीं थी उसमें, अगर रेकलेसनेस थी, इंटेंशन नहीं था, तब भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। एंड एट लास्ट नेग्लिजेंस था कि नहीं था, आप सर्विसिंग नहीं करा रहे थे, टायर में आपको पता था नट बोल्ट जो है वो बहुत लूज था, टायर कभी भी निकल सकता है, बट व्हाट यू डिड, यू बेसिकली डिड नेग्लिजेंस, तो इन दैट नेग्लिजेंस केस भी जो है क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज की जा सकती है। Okay, now the fourth major element of crime is basically the injury under criminal law. तो चौथा ये होगा, पहला ह्यूमन बीइंग केपेबल, दूसरा मेंस रिया, फिर एक्टस रियस, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट शुड हैव बीन सम काइंड ऑफ हार्म टू ईदर बॉडी ऑफ द पर्सन, टू ईदर द माइंड ऑफ द पर्सन, टू ईदर द रेप्यूटेशन ऑफ द पर्सन, or the harm can be to either the property or maybe society as a whole. इनमें से किसी को भी अगर किसी भी तरीके का हार्म हुआ और इससे पहले पिछले 3 एलिमेंट्स फॉलो हुए, उस केस में क्राइम पूरा हुआ ये कहा जाएगा। सोसाइटी इटसेल्फ ट्रीटेड एज विक्टिम इन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। सो ऐसे केसेस जिसमें कि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, ऐसे में तो विक्टिम किसको माना जाता है, इस ऐसे केस में विक्टिम सोसाइटी को, स्टेट को माना जाता है। इंजरी नीड नॉट ऑलवेज बी फिजिकल और एक्चुअल, इंजरी जो है फिजिकल ही हो जरूरी नहीं है, इवन मेंटल, इवन बॉडीली इंजरीज के अलावा भी इंजरीज हो सकती है। ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, जिसमें हमने क्राइम को समझा, क्राइम के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को समझा। आई होप कि आप सभी को ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप जो है अपने फीडबैक्स, अपने कुछ कंसर्न्स जो भी हैं आपको, वो सभी जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, सो दैट आई कैन रिवर्ट यू बैक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।